Hello everyone, welcome to ManpreetRN Talks. So, if you are struggling with your nursing exam questions like NORCET, NCLEX or CBT, don't worry, you are at the right place. So, here we are practicing smart questions, learn fast and move one step closer to your passing NCLEX, NORCET or CBT exam. So today we are going to discuss a very important topic that is the pancreatitis. So एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. So all this we will discuss in this. So pancreatitis, it is the inflammation of the pancreas where digestive enzymes start digesting the pancreas itself, means autodigestion. So it can lead to tissue damage. सो नॉर्मली हमारे पेनक्रियास का क्या फंक्शंस है. सो पेनक्रियास हैज टू मेन फंक्शंस, एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन. सो एक्सोक्राइन फंक्शंस उसका क्या है. सो पेनक्रियास हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको सीक्रेट करता है. फॉर एग्जांपल अमाइलेज, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. लाइपेज इट इज फॉर फैट एंड प्रोटीज यानी ट्रिप्सिन दैट इज फॉर प्रोटीन. तो जो बेसिकली जो जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे पैनक्रियास के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. सो अंटिल दे रीच टू ड्यूडेनम तभी हमारे इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव होते हैं. तो पैनक्रियाटाइटिस में बेसिकली क्या होता है, देयर इज इन्फ्लामेशन ड्यू टू एनी रीजन. पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन हुई मीन्स पैनक्रियास के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड इट कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम. सो एंजाइम हमारे पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन. एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, देर इज रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. तो इंसुलिन क्या करता है हमारा, दैट लीड्स टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागोन इज इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. पैंक्रियाटाइटिस में बेसिकली जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है दैट गेट्स एक्टिवेट अर्ली एंड इट कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ अदर एंजाइम. सो जिससे फर्दर क्या होगा, देर इज ऑटो डाइजेशन मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियास एंड इससे इन्फ्लामेशन होएगा दैट कैन लीड टू नेक्रोसिस ऑफ द पेनक्रियास एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू हेमरेज. एंड पेनक्रियाटाइटिस टू टाइप्स का होता है, acute pancreatitis and chronic pancreatitis. Acute, you all know, it means there's sudden inflammation and it is reversible with treatment. And the chronic pancreatitis, there is repeated inflammation and it can lead to fibrosis and there is permanent damage to the pancreas. So इसके causes क्या हो सकते हैं. So causes, main most of important cause, that is the gallstones. गॉलस्टोन्स कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो बाहर नहीं आ पाते. सो जब देर इज इंक्रीज प्रेशर इन द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड इट कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स. नेक्स्ट है अल्कोहल. सेम अल्कोहल, अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल दैट इज इंक्रीज द एंजाइम secretions एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू spasm ऑफ द sphincter. सो एंड डायरेक्ट इट कैन लीड टू chronic pancreatitis mostly. And other cause क्या हो सकते हैं, there is hypercalcemia because it can also activate the trypsin early, hyperlipidemia, some drugs such as thiazides, steroids because it can lead to inflammation. And sometime हम जो procedure करते हैं such like ERCP that can also lead to pancreatic duct injury, so it can lead to pancreatitis. Next is the two signs that you have to remember for NCLEX, NORCET or whatever exam you are preparing. So एग्जाम में मोस्टली ये साइन ही पूछे जाते हैं, दैट इज कूलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन. तो कूलन साइन क्या होता है, कूलन साइन दैट इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकल एरिया. क्योंकि जब बहुत ज्यादा ब्लड वेसल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हेमरेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे कूलन साइन मीन्स ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है. ब्लीडिंग हमारे पेरिटोनियम में होती है. And second one is the gray Turner sign. So this is the bluish or purple discoloration on the skin on the flank sides. Okay, so it is indicate retroperitoneal bleeding. So it is in the emergency. You have to report healthcare provider immediately if you find Cullen signs or gray Turner signs in the patients. So now we are going to do some practice questions. Question number first. The client who has been hospitalized with pancreatitis does not drink alcohol because of religious convictions. The client become upset when the healthcare provider persists in asking about alcohol intake. What should the nurse tell the client about the reason for these questions?
सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक पेशेंट है एडमिट हुआ है विद पेनक्रियाटाइटिस एंड एचसीपी उसको बार बार अल्कोहल इंटेक के बारे में पूछ रहा है, तो जिससे बट पेशेंट क्या है ड्यू टू सम रिलीजियस वो अल्कोहल नहीं लेता है, बट एचसीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको बार बार पूछ रहा है, तो जिससे क्या है वो क्लाइंट है अपसेट हो गया है। तो इस टाइम में हमारा नर्स का क्या क्वेश्चन होगा कि हम पेशेंट को क्या बताएंगे कि हम ये क्वेश्चन क्यों उनसे पूछ रहे हैं। सो correct answer for this is there is a strong link between alcohol use and acute pancreatitis. And because why it is right, because हमने पहले causes डिस्कस किए थे, तो causes में मेन इंपॉर्टेंट causes क्या था, फर्स्ट इज गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन क्या करता है, हमारे कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है। सेकंड थिंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसको विद इन पेनक्रियाज एक्टिवेट कर देता है, तो जिससे पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। सो फॉर दिस रीजन वी हैव टू क्लैरिफाई। Next question. A client with acute pancreatitis has a blood pressure of 88 by 40 mm of Hg, heart rate of 128 beats per minute, respirations of 28 breaths per minute, and gray Turner sign. So gray Turner sign means it means patient को bleeding हो रही है. And what prescription should the nurse implement first? So जब भी first आए it means so we have to do first action, हमने क्या करना है। सो हम क्वेश्चन को डीपली रीड करते हैं तो हमें पता चल रहा है ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ग्रे टर्नर साइन है जिसकी वजह से पेशेंट है वो शॉक में जा रहा है, मींस पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, हार्ट टैकीकार्डिया हो रहा है एंड टैकीपीनिया हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें हमने पहले पेशेंट को स्टेबल करना, मींस बीपी को स्टेबल करना है। सो इनिशिएट इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, नो। प्लेस अ इंट्रावेनस लाइन, यस वी विल डू फर्स्ट बिकॉज हमने पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देने हैं, सो वी विल प्लेस अ इंट्रावेनस लाइन फर्स्ट। सो हम इसको भी रखते हैं। देन पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड, नो, ये हमें तो पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ करने के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में, तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं। इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, सो दैट कैन विल बी डू लेटर। सो करेक्ट आंसर इज द सेकंड, प्लेस अ इंट्रावेनस line. Next question. On 16 Jan at 8 am, the nurse is caring for a client with acute pancreatitis and reviewing progress notes as listed below. So 15 Jan at 8 am, patient vital signs are temperature 37.4 degrees Celsius, heart rate 138, BP 80 by 48 mmHg, pain is 9 on 10 point scale, मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट को पेन हो रहा है एंड क्लाइंट इज रेस्टलेस। सो एट 10 am discussed following lab values with Dr. Samit MD. Hematocrit is 27.6, hemoglobin is 7.6 gram per deciliter, मीन्स बहुत ज़्यादा HB कम है पेशेंट का। एंड एट 11 packed PRCB, packed RBC is infused, no advice, so no adverse reaction is noted. So question, which found that the desired outcome of the transfusion is obtained at this time? Blood pressure is 1110 by 80 mm of Hg. Pain is 4 on 10-point scale. Hemoglobin is 12 gram per deciliter and platelet count is 1,45,000. So blood is infused, so it can lead to increase the hemoglobin. So hemoglobin is 12 gram per deciliter. So previous patient का HP 7.6 ग्राम पर डेसीलीटर था, तो with the help of packed RBC means blood transfusion, so blood hemoglobin will be increased, not blood pressure. So for BP we have to give IV fluids like colloids or crystals, and we have to monitor hemoglobin improvement, and pain control is regulated by the pain medication. So here is the option is blood transfusion. So correct answer for this is the third, hemoglobin is 12 gram per deciliter. So next question. The nurse should monitor the client with acute pancreatitis for which complication?
So options are heart failure, duodenal ulcer, cirrhosis, or pneumonia. So we will solve with elimination method. So duodenal ulcer or cirrhosis, it is related to duodenal ulcer. It is related to gastritis or there is acidic problem. So pancreatitis, it is not. So we will eliminate this method, this option. And cirrhosis is mostly uh, acute with the connected with the liver and this disease. So थर्ड ऑप्शन वो भी हमारा कट हो जाएगा। सो रिमेनिंग ऑप्शन 1 एंड 4। पैनक्रेटाइटिस एंजाइम जब लीक आउट हो जाते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो लंग्स है उसको फर्स्टली अफेक्ट कर देते हैं। तो पेशेंट विल हैव निमोनिया, एटेलेटिस, प्लूरल इन्फ्यूजन। सो एंड it does not cause liver failure or heart failure. So most complication is pneumonia. So respiratory complication is most priority if the patient is having acute pancreatitis. क्यों? Because enzymes they can penetrate, they can leak out from the pancreas and it can invade the lungs tissues. Next question. When the nurse is providing care for a client hospitalized with acute pancreatitis who has severe abdominal pain, which nursing intervention would be most appropriate for the client, for this client? Select all that apply. So this is the SATA question. जब भी हमने SATA क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वी हैव टू श्योर जब जिस क्वेश्चन में हम जिस आंसर में 100% श्योर हों उसी आंसर को हमने सेलेक्ट करना है इन एग्जाम में, क्योंकि SATA क्वेश्चन देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन SATA क्वेश्चन। सो जिसमें आप 100% श्योर हो उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करो। सो इस ऑप्शंस वी हैव शुड रीड: place the client in a sideline position, administer morphine sulfate for pain management as needed, maintain the client on a high calorie, high protein diet, monitor the client respiratory status and obtain daily weights. So, what is most important? क्वेश्चन में क्या है? पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज है पेनक्रियाटाइटिस से और हु हैज अ सीवियर abdominal पेन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन, सो प्लेस द क्लाइंट इन अ साइडलाइन पोजीशन। यस, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है सो हमने क्या करना है, अगर साइडलाइन में पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो प्रेशर है वो हमारा पेनक्रियास से थोड़ा कम हो जाएगा। सो वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द पेनक्रियास। सो वी विल प्लेस द क्लाइंट इन अ साइडलाइन पोजीशन। सो इससे क्या होगा, हमारा एब्डोमिनल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इट कैन रिलीव द pain as well. So this position is appropriate. Then administer morphine sulfate, and there is a controversy because some books they said कि morphine हमें administer नहीं करना है, क्योंकि morphine sulfate है जो हमारा sphincter of OD होता है that is at duodenal, तो उसको spasm कर देता है जिससे क्या हो जाता है कि it can lead to increased pressure in the pancreas duct. So some books they prefer and some books not prefer. For NCLEX exam, you have to avoid morphine in the exam. And other options, and we can also provide semi-fowler position. That is also appropriate. And the nurse should also monitor client's respiratory status because for respiratory complication, as we have discussed, कि patient को pneumonia हो सकता है। एंड पेशेंट का वेट भी हमने डेली मॉनिटर करना है। क्यों करना है? बिकॉज इन द acute phase, स्टार्टिंग phase, so patient may have nutritional food volume deficiency, so we have to monitor daily weight. So correct options are 1, 4 and 5th. एंड पेनक्रियाटाइटिस में हम मोस्टली acute pancreatitis या chronic pancreatitis और पेशेंट को मोस्टली हम एनपीओ रखते हैं। फूड एंड फ्लूइड वी हैव विदहोल्ड, क्योंकि हमने पेनक्रियास को रेस्ट देना होता है। Next question: the nurse notes a client with acute pancreatitis occasionally experience muscle twitching and jerking. Means occasionally is experiencing muscle twitching or jerking movement. How should the nurse interpret the significance of these symptoms? The client may be developing hypocalcemia, and the client is experiencing a reaction of mepridine, and he has a nutrition imbalance, and he needs a muscle relaxant to promote rest. So first we have to, अगर पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, सो वी हैव टू डू असेसमेंट। तो असेसमेंट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सो यू शुड नो कि हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। सो हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम होते हैं दैट इज इन मसल ट्विचिंग और जर्किंग मूवमेंट, like we have to know chopstick signs and the Roche's sign. So those signs very important है hypocalcemia के, you should always remember.
सो पेशेंट को क्या होएगा, मसल ट्विचिंग और चेकिंग होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट पेनकेटाइटिस। तो पेशेंट को कई बार क्या हो जाता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। सो वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर दिस। Next question. A client is receiving propylene bromide in the management of acute pancreatitis. Which finding would indicate that the nurse should discuss withholding the medication with the healthcare provider? Absent bowel sounds, increased urine output, diarrhea, or decreased heart rate. So we have to know what is the side effect of this drug and what it causes. So correct answer is this is the absent bowel sound. So we have to know जो ये propylene है that is it is a anticholinergic drug, antispasmodic medication. So it basically decrease the vagus stimulation and pancreatic secretions. So it is a contraindicated in paralytic ileus patient. So there is an option absent bowel sound. So we have to further clarify with the healthcare provider because and other side effects इसके क्या है that is the urinary retention means decrease urine output and constipation or diarrhea and tachycardia. So it is clear. So next question, which dietary instruction would be appropriate for the nurse to give a client who is recovering from acute pancreatitis? तो means हमने क्या dietary instruction हमने patient को देने हैं because from a pancreas that gets stimulated mainly by fat and large meals. So when stimulate, it release more enzymes, so it can cause more pain and inflammation. So what is the goal of diet? So goal हमारा क्या है? Rest करवाना हमने pancreas को and we have to prevent pain attacks and improve digestion. So उसके लिए very important है we have to avoid dieting means and crash dieting or binge eating. Crash dieting patient sudden overload इट वेरी ओवरलोड सो पेनक्रियास गेट्स वेरी स्ट्रेस बिकॉज इसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में सो वी हैव टू अवॉइड क्रैश डाइटिंग एंड वी हैव टू अवॉइड अल्कोहल वेरी स्ट्रिक्टली and fatty foods such as fried food, butter, cheese, and because fat needs more pancreatic enzyme, so there is increased workload on the pancreas and it can lead to increased pain. So there is no specific to do eat in 6 meals. A patient can eat whenever he feel comfortable. So there is no restriction like he needs to eat for 6